Hey guys, my name is Devansh and I'm the founder of Divergent Classes. We help you to prepare for your design exam. To know more about our topper faculty mentorship batches, WhatsApp me on the number in the description or visit divergentclasses.com. As you all know, NID exam की dates आ गई हैं. Even the registration has started. The registration dates are 3rd September to 3rd of December 2024. The prelim expected exam date is on 5th of January and the mains is expected to be happening between 26 April to 4th of May. As many of you were requesting us for an NID strategy video, so here we are. This strategy video is by Ujjwal, who is a mentor at Divergent Classes and currently studying in NID. He was also eligible for IIT Roorkee. In this session, we will be covering the strategy in very detail. So, अगर आप कुछ और भी काम कर रहे हो तो just get away from it and focus on this. ये कोई normal strategy video नहीं है. This strategy video is by a topper जिसने खुद top ranks achieve करी हैं and अपना dream college NID में admission लिया. तो इस session को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी insights हैं जो आपको कोई normal teacher या mentor नहीं दे सकता है. These insights can only be given by a ranker who prepared himself. Without wasting any time, here we go. So hi, my name is Ujjwal Rathore and I'm from Bhopal and I'm currently in my first year in NID Bhopal. And apart from that, I got a seat at IIT Roorkee. So yeah, I can guide you guys both for NID and UC. And apart from that, yeah, basically I love drawing and my strategy or my ideology basically is there are a lot of loopholes in the preparation for all these exams, which is all these coachings and all this stuff that is apart from, this ek bana ke rakha hai ki yaar ye pad lo and all these things which are very wrong, the mindset that people have. And apart from that, there are a lot of resources which are not there. So that's why I decided to be a part of it, to help you guys, because I felt the same during my preparation. And I want to fill those loopholes basically. So yeah, that's all about myself. And yeah, I think I should start with this session. So this session is basically about NID strat. First of all, let me start with this particular question or this particular statement that is here. That is understanding NID. Because without understanding NID, we can't make strategy for something. Let's say you want to make a strategy for your exam, but you don't understand कि basically exam है किस subject का, actually वो क्या subject है. You can't make the strategy for it, even if you know the syllabus. So basically, first, the thing we need to do is understand NID. So basically, ये NID ना बन जाए और तुम इस तरह के लोग ना बन जाओ जैसे NID control कर रहा है, and your whole preparation will be like one of this thing that are. तो इसलिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए एनआईडी की और उसके हिसाब से हमारा एक करिकुलम उसके हिसाब से हमारी एक स्ट्रैटेजी बन जाए दैट विल बी बेटर, राइट? सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई विल बी स्पून फीडिंग यू गाइस कि अच्छा ये कर लो, यू गाइस विल क्रैक इट. इट्स नॉट. एनआईडी इज वेरी डिफरेंट. So I'll be tackling one of those issues, a lot of issues that you guys have during your preparations or will be having those issues. So I'll be tackling them, and basically throughout the process, you will discover a strategy, you will discover the mindset you guys need, because at the end of the day, strategy will be yours, but I'm just giving you a path or a way to do that, right? Yeah. So let me give a small overview regarding the session. Here we have decoding and understanding the exam, basically, because as I told, is it really important for you guys to understand it. Then we will be discussing curriculum, right? Now, the curriculum is not something that this is the curriculum that I thought with other mentors from NID that we kind of made up for the people that we are, the students we have. So it's just not the ultimate curriculum, but it kind of revolves around all the topics, all the things that is there in NID. But see, NID एक ऐसा एग्जाम नहीं है that I'll tell you, because बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर 3-4 बुक बना दी, you guys read it, then you will crack it or something. It is never like that. ठीक है? So NID consists of lot of questions, lot of topics, and you can't predict. Even if you complete all the topics that is there in the curriculum that I'll show you guys, you can't give a certainty कि यार यही questions आने वाले हैं at something like that, right? That's why
in our curriculum, recently had a session on observational sketching or observational drawing. So things like this really helps a lot, right? In that module, we'll discuss whatever the things that was there in that. But हाँ, ऐसे ऐसे topics होते हैं that will cover, or even अगर कोई नया topic आ रहा है, तो how will you add a flavor to it, and all these things will be there in observation, all those things, right? Moving forward, this is just an overview. So mindset for curriculum, right? So we'll discuss कि हमें किस extent तक actually curriculum को पढ़ना चाहिए, because there are a lot of topics and हम कितने extent तक पढ़े. This is a very interesting as well as a question you guys might be wondering about कि यार actually हमें किस extent तक कुछ topics को पढ़ना है, right? Now things to follow. Apart from curriculum and all this thing, there should be things we all call as schedule, right? हमें कैसा schedule follow करना चाहिए and all that thing. What are the things to follow? And there are a lot of things that I'll share from my preparation and from preparations of other people that I've met in my preparation era. Then we'll have part A for NID, which is not a very a topic that ऐसा कुछ इतना serious नहीं, but we'll have a overview about it. Then some common misconception that you guys have towards NID exam, which is really needed to be cleared, because उसके बिना it will be थोड़ा दिक्कत आएंगी तुम लोगों को जिस पाथ तुम follow करोगे for NID preparation. And then discussing works, I'll have included some of my works and we'll discuss over it कि actually मैंने कैसे tackle करा उस problem पर, how I presented the solution. And let me tell you guys, it's not the ultimate solution. It is one of the solutions. It's not the solution, right? Now we have curriculum. See, now this curriculum is designed by me and different mentors from NID. And now, so it's just not key. I'm not saying that's the only ultimate curriculum that is there, but it covers, basically, it revolves around all the topics that is there in NID, right? There are some topics. Let's say, बहुत सारे जैसे मैंने बोला कि there are questions which we just discussed कि unpredictable होता है, कुछ भी questions आ सकते हैं. Then how we prepare for such questions now, because that is also a part of curriculum only, right? Now that we recently had a session on observational sketching. So observational sketching mein, now why it is important. So we discovered is I just gave them assignment of live sketching. And in that, I gave them assignment कि तुम लोगों को बाहर जाना है and you have to sketch 5 characters, 5 different people, and you have to write about observations that you have made about regarding them. Now, why it is important is because let's say you have sketch a person who is a vendor or a tea seller, right? Now, when you sketch that person and write 5 things about him, you know that character कि अच्छा ये person ऐसा है. Now, in an examination, if you want to design a product for, let's say, you want to design a product for a tea seller or someone, then you will have the user requirements, you have the understanding of that particular person. Or even if you want to draw that tea seller in a composition drawing, then you have a characters, you have additional things because you have observed that person. That is why different exercises like this, which don't actually caters a particular question, but which is there is present in every single question. So like modules like this or topics like this, observational sketchings and different topics that we will discuss kind of caters into all the topics. So basically हमारे curriculum में ऐसे topics होते हैं which will kind of help you guys to tackle different topics which will be unpredictable. Okay. So I just gave an example कि हमने इस module में क्या cover करा था and what I gave as an exercise. Okay. So yeah, moving forward, we have till now. So basically मैंने month के हिसाब से divide करा गया है different months here. So first month, that's line and shapes, doodling, perspective, basics of observational drawing. So I have 2 ideologies. Then just let me get one more slide. That is, first, that is really important to build the fundamentals. That only we can just climb the upstairs. ठीक है. बिना fundamental के अगर हम और आगे चलेंगे, then we are messing up with the fundamentals and we are just collapsing the whole building. ठीक है. Then first ideology तो यही है कि building the fundamentals. This is for everyone. Like even if you're tackling something, any exam, this is really important.
Now, other thing is this exam is skill based, right? It's not कि तुम एक topic पढ़ लोगे and then you what we are conditioned till now is, let's say हमारे exam होते थे, let's say हमारी maths की NCERT लेते हैं, right? है ना, मैथ्स की एनसीईआरटी यू गाइस यूज्ड टू हैव, आई डोंट नो अगर तुमने एनसीईआरटी से पढ़ा है नहीं, पर हमारे ऐसे मॉड्यूल रहते थे, पहले चैप्टर्स रहते थे, उसमें इंफॉर्मेशन रहती थी, और एट द बैक ऑफ द चैप्टर देयर यूज्ड टू बी एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3, राइट? तो पहले हम ये डिस्कस करते थे एंड देन वी यूज्ड टू जंप ऑन ऑल द एक्सरसाइजेस बेसिकली, राइट? व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, बट आई डोंट बिलीव दैट इज इट इज वेरी effective. Why? In skill based examination, it's really important to go through this ideology is learning by doing. And how exactly what I used to do and what I mentor my student is, first, before let's say koi bhi topic hai, so first I'll introduce with them with any particular topic and then try to do, let's say take an example ki storyboard hai, right? सो अगर मुझे स्टोरी बोर्ड पढ़ाना है किसी को और आई वुड जस्ट वांट देम टू लर्न स्टोरी बोर्डिंग, तो आई वोंट टेल देम कि अच्छा ये एंगल होता है, दिस आर डिफरेंट फ्रेम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू बिल्ड फ्रेम्स, डिफरेंट कैमरा एंगल्स एंड ऑल दैट. व्हाट आई विल टेल दैट पर्सन इज कि जाकर एक क्वेश्चन उठाओ स्टोरी बोर्डिंग का एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अब वो बंदा 4 फ्रेम की स्टोरी बोर्डिंग करेगा एंड ही विल रियलाइज कि यार मेरी चारों फ्रेम सेम लग रही है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट. स्टोरी इज वेरी बहुत बड़ी स्टोरी, बट मैं उस 4 फ्रेम्स में उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ. ही विल हैव 2 प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, मेरी सारी फ्रेम सेम दिख रही है. सेकेंड प्रॉब्लम, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ. नाउ ही विल गो ऑन यूट्यूब और एनीवेयर टू हिज मेंटर एंड नाउ ही विल सीक फॉर दिस प्रॉब्लम्स एंड फॉर द सॉल्यूशंस कि यार एक्चुअली इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. And then he will learn certain things and then he will implement it and he will fix. Then again he will do the same exercise with 4 frames. In some other questions he will discover acha ye nahi problem hai, and then he will seek for the solution. So this is my thing. ये जो basically जो पहली वाली होती है ना, जो हम बचपन से कर रहे हैं कि हम पहले कोई मॉड्यूल पढ़ते हैं and then we'll try to do exercises for it, ये आई डोंट थिंक इट डोंट वर्क फॉर मी. अगर तुम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो ना तो ही वर्क होगा, बट फॉर मी एक्चुअली ये वर्क नहीं करता, बिकॉज आई काइंड ऑफ ऑब्जर्व कि स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें ये सेकेंड अप्रोच लेना ही पड़ेगा. वेयर first you try to do something and then you find problems in it, then you try to seek the solution. It's not the other way around कि पहले तुम अच्छे से मॉड्यूल पढ़ लो, YouTube videos देख लो and then try to do something. Nah, that doesn't work. So you got the ideology now, how we learn by doing something. Basically, we do that thing first, then we try to find the problems in it, then try to seek the solution. Now, basically, like as I told, we have to build the fundamentals, that is line and shapes, doodling, perspective, basics of observational drawing. Now, all these drawings or all this module don't have any shading at all because it works on lines, it works on doodling is also based on lines and how you think. It's just like warming up your brain. Perspective is also based on light. So that's why I'm not introducing shading and all that in the first module, in the first month. Then we got a brief about object drawing, okay, figure drawing, head drawing, poster design, sequence drawing. Just read it, guys, because अगर मैं एक topic पढ़ाने मतलब बताऊंगा तो it will be a very lengthy session. But yeah, this is the first, this is the second month where we'll be having object drawing, figure drawing, head drawing, poster design, sequence drawing. Then in the third month, we have advanced object drawing, composition and POV drawing. POV drawing is basically, अगर तुमने NID के previous year questions solve करे होगे तो उसमें ऐसा होता था किसी एक composition दी गई रहती है and you have a certain point in the whole composition and you have to draw it from that particular view. So that is POV drawing simply. That we have storyboarding, problem solving, and object reusing in the third month. In the fourth month, we get a level up. Okay. This is an advanced thing that is drapery, human figure, textures, miscellaneous topics from NID, जो बहुत as in very dominant topics नहीं है, but which arrives from the topics like storyboarding or object reusing, from poster design, like that. Let's say stamp design, which is a very, which is like, it's derived from poster design only because it's just basically a what we say,
स्टैम्प ओनली, तो उसका स्टैम्प का एक फॉर्मेट होता है, बट इट इज डिराइव फ्रॉम पोस्टर ओनली, तो इट्स ऑल इज इन मिसलेनियस टॉपिक. अगर तुम ये सब कवर कर लोगे तो व्हेन यू विल कवर स्टैम्प डिजाइन एंड छोटे छोटे टॉपिक्स, सो इट वोंट बी अ वेरी बर्डन फॉर यू, राइट. द लास्ट मंथ देयर विल बी इज लेवलिंग अप टॉपिक्स. ये सब टॉपिक जो जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा टचअप करके इनको थोड़ा और रिफाइन करेंगे. दैट इज लेवलिंग अप ऑफ टॉपिक्स. देन वी विल हैव रिविजन of all these topics, because बहुत सारे topics and we need to understand the basics or the key points of every topics. Mocks बहुत important है. Then personal critiques on every single word. This is my approach for the students that will be connecting with me. You guys can also follow it if you're not even connecting with me. But in the mindset for in the next thing, that is mindset for curriculum, we will discuss कि हम एक एक topic को कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो जो लोग मुझसे ज्वाइन है, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. बाकी तो वी विल डिस्कस. And rest of the people, everyone, you could take a screenshot of this gonna help you guys. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करोगे या जैसा भी हो, ये मतलब these are the topics which you should learn. ये करना बेहद जरूरी है, इसलिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग अभी ले लो, दैट विल बी इजी. एंड व्हाट आई एम सेइंग, जैसे कि उज्जवल ने बताया, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग एवरीथिंग, लेवलिंग अप एंड ऑल दैट थिंग, एंड ऑफ कोर्स वी हैड स्टार्टेड इन आवर बैच. एंड वन मोर थिंग which I want to mention here, this is basically about like much about the part B. And in part A is like not such as कैसे बताऊँ मैं, part A as such नहीं है कि मतलब मैं as such कुछ topic बता दूँ. इस पे they are like included in so many things are included in part A basically. And उस पे GK and तुम्हारा like वो जो ये होता है current affairs, it's like from the last 2/3 months from the examination. like एग्जाम के 3-4 महीना पहले जो भी का हो रहा है, या 3-4 महीने क्या 6 महीना पकड़ लो, अभी से ही जो भी चीज अराउंड चला, just see the Olympic, whoever participate like Indian participant there in the Olympic, just see कि किसको क्या मेडल मिला. if मैं अगर अभी तुम लोग को बता दूं, एक शूटर है, उसने अभी ब्रोंज मेडल जीत लिया है, मेकिंग इंडिया प्राउड, एंड वो काफी अच्छी चीज है. तो ये सारी चीजें तुमको याद रखना पड़ेगा कि इन टोटल इंडिया ने कितना मेडल जीता, कितना गोल्ड था, हु आर द पीपल हु सिक्योर्ड गोल्ड. दैट विल इंक्रीज योर, ऑफ कोर्स लाइक वो तो एक पैट्रियटिज्म भी हो गया कि तुम देख रहे हो वो चीज. एंड दूसरा, इट विल बी पार्ट ऑफ जीके, पहली चीज. दूसरी चीज, करंट अफेयर्स, लाइक अभी इलेक्शन हुआ है, हु आर द मिनिस्टर्स, यू कैन गो एंड सी दैट. बजट के बारे कुछ थोड़ा मोटा देख सकते हो, ठीक है, ये एकदम इन डेप्थ बता रहा हूँ मैं. And then in a maths part, जैसा कि उज्जवल ने बताया, NCERT is all enough. Nothing else should be done in maths for NID. Specifically for the UCEED, you have to do little much if someone is planning to do both the things. And then some like basic reasonings of like just like a moderate level reasoning can give you a fetch a good marks. Okay. And apart from this, what we are thinking and what we are going to give extra to the students of our batch of Divergent Classes is that कि from the starting, जैसे ही आपका 2 महीना और 3 महीना complete हो जाएगा, like in between, we are giving you the hints, giving you the insights of mains as well. like what we thought of कि from the starting अगर किसी बच्चे को हम इतना लेवल तक पढ़ा दें ताकि वो इतना सोच पाए कि मेंस में, अगर मेंस के लेवल तक हम उसको पढ़ा देते हैं तो प्रीलिम्स ऑफ कोर्स इजी हो जाएगा उसके लिए. इट्स लाइक ऐसा है ना कि तुमको पहले से लेवल अप बूस्ट करवा देंगे. इट वोंट बी लाइक कि मैं पहले से मेंस के पढ़ा दूं. इट्स लाइक कि बेसिकली मैं तुमको इतना नॉलेज दे दूं जिससे मेंस में भी वही आता है, बेसिकली पोस्टर मेकिंग ही आता है मेंस में, बट दैट नीड्स लाइक वेरी वेरी मच टाइम एफिशिएंसी एंड ऑफ कोर्स योर coloring things and all, understanding to the question, these all things are like so much, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंस में ये सारी चीज़ को देखना. एंड सम मोर क्वेश्चन आर देयर इन द मेंस फॉर लाइक ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है, कुछ कुछ तुमको DIY करना पड़ता है. तो वी आर स्टार्टिंग योर DIY सेशन लाइक बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे. And in that, we'll train you to like how to observe the things in your mind, how to get the things, how to familiar with the object, how to understand the proportion and all that particular things. So that will increase somewhere overall your performance. And that these are the things which I felt in my preparation. Like I qualified for the prelims, but I didn't had like that great preparation for the mains because I was like कि शायद नहीं हो पाएगा and मेरा UCEED भी हो गया था, तो I'm not that much lenient toward mains.
but then I got to know कि okay मेरा हुआ है, and I was like, then I started my preparation, so I couldn't do much greater in that. I just lost for the 4 marks. So it's basically, then I thought, okay, this could happen with so many people, and eventually so many people के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि वो prepare ही नहीं कर पाते. So for the people who are there with us in a divergent classes, we gonna make them that much confident for the prelims ताकि वो अच्छे से उस चीज को क्वालिफाई कर पाए, and that would be the extra part which we will be giving it to you. So yeah, ये मैंने मेंशन कर दिया, बस अभी के लिए इसको हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना. एंड बाकी देखो, दिस इज द पार्ट ए, लाइक वही थोड़ा बहुत तुम्हारा लोगो वगैरह आता है. इट्स लाइक बेसिकली द जीके पार्ट. हु आर द न्यू डिजाइनर्स, हु आर द पेंटर्स. एंड एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, लाइक दिस इज द, ऑफ कोर्स मैं बताना चाहता हूँ कि ये उज्ज्वल का स्ट्रैटेजी है. बेसिकली हमारा इंडिया का तुमको हर चीज पता होना चाहिए, लाइक जोग्राफिकली एंड लाइक पॉलिटिकली, ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली एज वेल. तो ये सारी चीजें हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, लाइक जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा रीजनल भाषा है, एंड लाइक व्हाट आर द ड्रेसेस दे यूज्ड टू वेयर, इफ दे हैड अ डांस लाइक रोफू और समथिंग, दे हैड अ डांस और व्हाटएवर. सो लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड केरला तक हर एक स्टेट के बारे, उसका हेरिटेज साइट, उसका बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल पार्क, उसका पेंटिंग का स्टाइल, वहां से ग्रेट डिजाइनर्स, वहां से ग्रेट म्यूजिशियंस और वॉट एवर, लाइक इन द फील्ड ऑफ आर्ट और डिजाइन. और इवेंचुअली लाइक नाउ डेज लाइक you can't really just stay in art and design only. There are like so many people who are there in the film fair, like someone who get Oscars. We had around 10 or 12 Oscars in total. So you should know each and every part, because NID gives you the scope for film and videography and all that part. So अभी से तुमको इतना सोचना होगा कि हर एक स्टेट के बारे में, हाँ, तो उस तरह से स्टेट वाइज अगर तुम पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि तुम हर एक स्टेट के बारे प्रॉपरली जान भी जाओगे. एंड फिर तुम वो भूलोगे ना नहीं कि महाराष्ट्र का वालरी आर्ट है, वेस्ट बंगाल का तुम्हारा इज लाइक कालीघाट पेंटिंग है, something like that which you had to put it in your mind. So these are the things. And उसके बाद aptitude is like so basic, you don't have to do much in aptitude, but like इतना basic reasoning कर लेना कि अगर तुमको कोई like water image दे दे तो तुम उसको बता पाओ. अब इतना भी मत कर छोड़ के आ जाने कि water image नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि water image is not much hard. ठीक है. So this is from my side for the part A basically. Okay, Ujjwal, go ahead. Guys, अभी तक तुम लोग कैसा लग रहा है सेशन? एक बार करके बताना. Yeah, sir. Okay, so I have a question. If I'm preparing for both the exams, like I'm targeting both UCEED and NID, and my main focus is UCEED, so what should be the approach? And how you guys are going to help if I join? मैं पहले आंसर करूँ? Yeah, sure. Okay. So जैसा उसने बताया कि वो UCEED और NID दोनों एग्जाम देना चाहते हैं. आई लाइक सजेस्टेड एवरीवन टू गिव ऑल 3 एग्जामिनेशन ऑफ डिजाइन, लाइक इवेंचुअली ऐड निफ्ट एज वेल. बट चलो ठीक है, ये 2 एग्जाम का बताता हूँ. इस पे क्या है कि UCEED is much towards like as a part A, but from this time they had around 100 marks of part B. So okay, ठीक है. And in NID they had around 70 marks of part B and 30 marks of part A. तो for part A you had to prepare like a UCEED. अगर तुम UCEED के इतना aptitude, reasoning और maths prepare कर लेते हो तो तुम्हारे लिए तो लाइक NID का एप्टीट्यूड और मैथ्स इतना हार्ड होना नहीं चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, NID के लिए तुमको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जीके, थोड़ा बहुत ऐसा करंट अफेयर्स से फेमिलियर रहो, न्यूज से फेमिलियर रहो, एंड जस्ट बस थोड़ा सा और लाइक ऐसा पेंटिंग वगैरह देख लिया जैसा मैंने पहले बताया था, बस. तो तुम उसका पार्ट NID का पार्ट है डन. एंड फॉर द पार्ट ऑफ UCEED you had to put on efforts, like you had to give efforts, you have to do many of the things like maths, reasoning and like verbal reasoning, mechanical aptitude. These are the things. इसका हम लोग जब UCEED के लेक्चर में बात करेंगे तो उस पर प्रॉपर बात कर सकते हैं. देन इन पार्ट B, like if you have to like totally be lenient with the NID. like NID में जो क्वेश्चन आता है वो UCEED का क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही होता है, like not even a different one. पर्सपेक्टिव NID पे जो आता है उससे सस्ता पर्सपेक्टिव आता है UCEED में. एंड like whatever क्वेश्चन like जो NID के पास होता है डिजाइन एप्टीट्यूड वाला और डिजाइन सॉल्विंग थिंकिंग whatever you say, वो सेम क्वेश्चन और लाइक मे बी लेस लेवल का होता है जो UCEED पे आता है. तो पार्ट B NID से प्रिपेयर करो और पार्ट A UCEED से.
और अगर तुम डाइवर्जेंट के साथ पढ़ोगे, वी हैड द सेम थिंग. ऑफ कोर्स मैंने वही बोला कि जब पार्ट बी का क्लास होगा, पार्ट बी यू विल बी लाइक टोटली असाइंड फॉर एनआईडी एंड पार्ट ए असाइंड फॉर द यूसीड पार्ट ए. तो दोनों ही कवर हो जाएगा. एक्स्ट्रा यूसीड पार्ट बी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर अगर एनआईडी का पार्ट बी के लिए पढ़ रहे हो, और एनआईडी का पार्ट ए के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर यूसीड का पार्ट ए के लिए पढ़ लो. थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो जीके वगैरह का पार्ट होता है वो यूसीड में नहीं आता, वो यू हैड टू डू इट लाइक फ्रॉम योर ओन सेल्फ, लाइक वर्क फ्रॉम योर ओन सेल्फ. वी गोना प्रोवाइड यू दैट थिंग एज वेल, बट या वो अलग चीज हो गई. तो दीज आर माई लाइक ऐसा मैंने पूरा ऊपर का बता दिया कि करना क्या होता है. ठीक है. अच्छा, हाँ, राइट. अच्छा, मेरा लाइक संचिका के साथ डिस्कशन, आई वांट टू हैव अ डिस्कशन बिकॉज मुझे ऐसे लाइक कोई सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड नहीं करना है, बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन संचिका. तुमने पूछा एनआईडी यूसीड के लिए क्या आई वांट टू, मतलब मैं एनआईडी के लिए करूँ या ना करूँ, दिस इज लाइक अ वैलिड क्वेश्चन. बट हाउ डू यू नो दैट मे बी तुम्हें आईआईटी जाना हो, व्हाटएवर द रीजन इज, बट हाउ डू यू नो दैट योर, because this is a skill based examination, there is no syllabus at all, as in if we look at from the outer part. So how do you know कि तुम्हारा जो mindset है, तुम्हारा एक personality that correlates with UCEED exams, not with NID. Let me give an example कि I have a friend, she's right now in IIT Hyderabad first year. तो वो NID के लिए she was preparing for 2 years for NID, मतलब 10th 11th 11th 12th, और फिर उसने दिया था eventually. एंड यूसीड के लिए उसने कभी प्रिपेयर नहीं करा, बट शी वाज वेरी गुड एट स्केचिंग. तो उसके पार्ट ए में बहुत बेकार मार्क्स आए थे, बट शी स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल इन यूसीड पार्ट बी. ठीक है, अनन्या राठौर, या शी इज माय फ्रेंड. सो या व्हाट आई वाज सेइंग इज कि योर फ्रेंड टू, ग्रेट. Yeah, so like what I was saying is she didn't prepare for UCEED at all, and she scored very nice marks in UCEED. The highest mark that I know, that is 76 out of 100. Okay, and she didn't even qualified NID at all. She was preparing for 2 years, and she was so great at sketching, but still, जो भी उसने mess up करा है, that's okay. But how do you know? She was with that mindset कि मुझे तो NID अहमदाबाद ही जाना है या मुझे NID जाना है. But she ended up being in IIT Hyderabad, right? So it's just like कि तुम्हारी sketching भी एक personality define करती that can relate with different examination. So it's just like that. I'm not putting some ideas in your mind कि तुम करो ऐसा करो या फिर वैसा करो. I'm just giving you an idea कि you might have a certain personality which we some kind हम गलत relate कर लेते हैं, यार मैं तो इसी एग्जाम के लिए हूँ या फिर मैं इसी एग्जाम के लिए हूँ. That is not like that. So try to give all the examination and try to find out in the paper itself कि वो exactly कहाँ पर तुम अपनी personality relate कर पा रहे हो. That's why you should give an idea and you see both. Not just for कि तुम NID जाना है या IIT जाना है. Maybe sometimes you don't know कि exactly मेरी personality क्या है. ठीक है, you got it, Sanchita? Yeah, I got it. Thank you. Yeah, great. So let me give in some insight on part A also from my end. So basically our part A बहुत diverse होता है. We can't really prepare for GK and current affairs, but there are certain things. So what I'll tell you guys is you go through your previous year questions paper. Still, उसमें से भी अगर तुम go through कर लोगे, still the questions which will be coming in the upcoming examination will be something you can't predict. So go through PYQs to get an idea. बट करंट अफेयर्स जीके में जिस टाइप से PYQs में है उस टाइप से कवर करो, उस सर्टेन टॉपिक से करो. एंड अ बेस्ट वे इज टू गेट अपडेटेड. तुम एक्चुअली करंट अफेयर्स जीके जैसे स्टैटिक जीके इज डिफरेंट, बट करंट अफेयर्स एक्चुअली तुम नहीं पढ़ सकते हो कि मैं 1 महीने पहले या फिर 1 हफ्ते पहले देखूंगा और सब करंट अफेयर्स पढ़ लूँ. नहीं, अभी से अपडेटेड रहो. जैसे ऐप पर इन शॉर्ट्स, तो उस पर अपने न्यूज लेते रहो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर भी जरूरी नहीं है, एक कॉलम डिसाइड कर लो न्यूज़पेपर का कि अच्छा ये पर्टिकुलर कॉलम है, एंड इट इज इन जनरल, नॉट जस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट फॉर नॉलेज ऑल्सो. तो हाँ, कि एक पर्टिकुलर कॉलम है, छोटा सा पढ़ना है. एंड और अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो ऐप मैंने बताया उसमें से भी, तो जस्ट ट्राई टू गेट अपडेटेड. ऐसे कुछ एज इन स्पेसिफिकली बहुत फोकस देकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, फ्रॉम टू बी ऑनेस्ट. देन फुल फॉर्म्स, ये सब, ये जो चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें उसी टाइम याद करनी है, देन ट्राई टू फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स
just before 1 month before the examinations, like full forms, logo, and all these things. And वो भी इतने specific कि तुम्हारे PYQs में किस टाइप के लोगोस पूछे गए, किस टाइप के फुल फॉर्म्स पूछे गए, उस टाइप से तुम्हें कैटर करना है. इन कल्चरल में बेसिकली आर्ट हो गया, डांस हो गया, ये सब होता है, पेंटिंग्स एंड ऑल दैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग. तो बेसिकली जैसे तुम्हारे इंडिया का मैप है, देन ट्राई फ्रॉम द अप और ट्राई फ्रॉम द वेस्ट, ट्राई फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और वहां से एक एक स्टेट से धीरे धीरे मूव करो एंड ट्राई टू मैप आउट एट, जैसे लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक दिस, तो उसका एक कल्चरल जो भी आर्ट है, उसका कल्चरल डांस है, मे बी देयर टेक्सटाइल जो वहाँ पे पहनते हैं, लाइक फैब्रिक और एनी काइंड ऑफ apparel design and something, to try to map it out. और ये भी I'll say you 1 month before, because this is strategic है, और तुम अगर अभी से पढ़ के बैठ जाओगे, you will forget it. So things like current affairs, अभी से अपडेट रहो, but things like this, play smartly. ये 1 महीने पहले तुम उसको थोड़ा सा कर लेना. Films and awards, ये kind of they continuously ask it in the PYQs. तो simple है, PYQ के पार्ट के थ्रू जाओ, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. और एप्टीट्यूड बहुत बहुत सिंपल एप्टीट्यूड पूछते हैं, तो वो सब 3-4 टाइप के एप्टीट्यूड से गो थ्रू PYQs, अंडरस्टैंड व्हाट आर काइंड ऑफ एप्टीट्यूड्स दैट दे हैव, एंड देन ट्राई टू कैटर इट. नाउ ऑब्जर्वेशंस इन टुडे, मतलब जो अभी इस साल का हुआ था, दे आस्क क्वेश्चंस लाइक कि अच्छा ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर है, एंड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर जो जिसमें से खुशबू आती है एंड ऑल दिस, एंड इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ऐसा ऐसा कुछ पूछा था. व्हाट काइंड ऑफ, वो पर्टिकुलर प्लांट का फ्लावर किस कलर का होता है. दिस इज जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, राइट. जो हमारी रात रानी हम जिसे बोलते हैं, वो प्लांट का फ्लावर, अगर तुमने ऑब्जर्वेशन कभी करा ही नहीं, तुम बाहर ही नहीं निकले, तुमने अपने आसपास की चीजों को ही नहीं ऑब्जर्व करा, यू वोंट बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस. सो बेसिकली जस्ट लुक फॉर बेसिक ऑब्जर्वेशन. बहुत डिटेल में किसी चीज को कभी नहीं पूछेंगे. सो द बेस्ट वे टू टैकल पार्ट ए इज टू गो थ्रू PYQs, रिवर्स इंजीनियर इट, कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसके पीछे माइंडसेट क्या है, एंड देन ट्राई टू डिकोड इट. सिंपल एज सिंपल. Apart from this, I don't want to discuss a lot on part A, because it's very diverse. So basically, one trick: go through PYQ and do reverse engineering. Try to understand the mindset behind every question and try to classify it. Okay. I think that's my input from my end towards part A. Now, we discussed curriculum. We discussed different ideology that I have towards curriculum, that is building the fundamentals and learning by doing. Now, how detailed we need to study a particular curriculum, right? Examples. So, as I said, कोई भी particular topic है, तो we can't really, we can't, what do you say? कि उसको बहुत डिटेल में कभी नहीं पढ़ सकते, right? Exactly. सो हमें कितने डिटेल में पढ़ना है. लेट्स से एक टॉपिक है स्टोरी बोर्डिंग. अभी मैं हमारे NID के KMC, दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर में, स्टोरी बोर्डिंग के लिए अगर मैं जाऊंगा तो आई फाइंड अ प्लेंटी लॉट ऑफ बुक्स ऑन स्टोरी बोर्डिंग्स, और वो बहुत मोटी मोटी होगी. तो देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इफ आई वांटेड टू लर्न स्टोरी बोर्डिंग, तो क्या मैं सारी बुक्स को गो थ्रू करूंगा, इतनी सारी बुक्स पढ़ूंगा? नहीं ना. देयर शुड बी अ लिमिट कि हम किस लिमिट तक कर सकते हैं. एंड देन आंसर इज इट्स एंडलेस. सो हम किस डिटेल तक उस टॉपिक को पढ़े. बेसिकली what is the requirement of the exams. डिजाइन एग्जाम्स में हमें कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, उस फर्स्ट थिंग इज रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन एग्जाम्स, तो उतने एक्सटेंट तक पढ़ना है. एंड अनदर थिंग इज दैट वी डिस्कस इन द आइडियोलॉजी, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग. तो अगर तुम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फाइंड करते हो, तो उसका सोल्यूशन सीख करो, देन यू विल एड अप टू योर नॉलेज. सॉरी, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा. सो बेसिकली दिस शुड बी योर अप्रोच, कि ये जो अप्रोच है, द आइडियोलॉजी, कि हमेशा एक प्रॉब्लम सीख करो एंड देन ट्राई टू फाइंड इट सॉल्यूशन. ये कभी स्टॉप नहीं होने चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए. अगर ये रुकेंगी नहीं, तो फ्रॉम एवरी सिंगल ड्राइंग यू विल हैव प्रॉब्लम्स एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, द नॉलेज दैट यू विल हैव फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक इज एनॉर्मस. बहुत ज्यादा हो जाएगा. दैट शुड बी योर लिमिट. So this is the thing. हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते हमें कितने डिटेल में पढ़ना है, बट वी कैन फॉलो सम अप्रोचेस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. वी कैन फॉलो अप्रोचेस. सो जैसे इवन हियर I covered module basics of observational drawing, or basic observations.
तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें that is related to observation, but I just said them कि why observation is really needed in the design exams, how can we observe, and gave them some exercises. Now they have an idea about observation. Now it is up to them how detailed they will observe, how uh, कितना वो explore करेंगे उस particular topics के लिए, and they will kind of follow the same strategies, that is trying to find a problem and then seek for the solution. अगर तुम ये particular ideology follow करोगे, then you will have an knowledge that will be a lot. So that is my answer for how detailed the topics need to be. बाकी अगर तुम मेरे साथ connected हो, तो then I will have some overview regarding some topics and then we'll do it together. But if you're doing self-preparation, not will be a part of me, then this should be a approach that you guys need to follow. Okay. Moving forward, yeah. Now what we have is go back to overview, and we have things to follow, right? We have things to follow. So now the things to follow in your preparation, apart from curriculum and all things, and we'll discuss 4 things. Basically, there are a lot of things, but observation. Now, why observations? Why observations, right? इसका particular पूरा एक module है, but ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा idea दूंगा. Life sketching, how to solve problems. Now, this is related to your preparation. So let's say why observation is really important. Let's जिन्होंने भी वो module attend करा होगा, they know. But for all the people, so basically let's take a question that is इस साल आया था sequence वाला, right? उसमें बोला था you need to create a pickle. How pickle is created, right? You have to show from the I guess this is the right spell. So you have to show 3 steps from the starting point to the end point. उसके बीच की 3 steps बताना है, that is your process. Now, what you have to do basically, even we solve it in the class, and there are a lot of people who kind of how they show it. कि normally हमारा pickle कैसे बनता है? There are आम जो हमारे raw mangoes होते हैं, that is ठीक है. So how it is cutted is कि एक basically एक I don't know what you guys called it, but in my native language it is called sarota, right? उससे हमारे केरी काटते हैं, simple. Now there were a lot of people who were showing it with cutting it from a knife. अगर तुम knife से काटोगे ना तो हाथ में लगेगी, and it is not generally नहीं काट सकते basically from knife. So this is your lack of observation और exploration करा ही नहीं कभी. तुमने pickle बनते हुए देखा ही नहीं, तो तुम उस चीज को कभी present ही नहीं कर पाओगे. That is why this is what NID looks for. This is a very not, I'll not call even a observation, but observation is just like common sense. Observing common things that is around you. You don't have to get into all this stuff ki yaar bahut detailed observation, but observations of basic things. Like I just gave you an example. If they are asking you how to make pickle, so you are not showing a knife for cutting all these mangoes and all that. You have to show this particular thing. ऐसा होता है. To cut and we basically pulls it down, right? Right, push it down. So हाँ, वही basic चीज है कि see how they try to test your observation through these basic things, right? So हाँ, so that is why observation is really important, because questions can be from any topic and from any end. And to gain marks, you need to show this small things which really affects. और ये सब कुछ ऐसे तुम्हारी कुछ book पढ़ के नहीं आएगी. This is through all these exercises like observation, life sketching, and all these things, right? That's why I give so much importance to life sketching, because you try to copy the things from nature, things which is around you, and NID is based on things which is around you, please. Right? We got it. You need to cover, and let me tell you guys, all the people that I know right now who are, and this is not just for NID guys, this is for IITs also, this is for UCEED also. All the people that I know that are right now in IIT and NID, they do life sketching a lot. And when I say lot, I say a lot, like बहुत ज़्यादा life sketching, which is like they don't do it as an exercise, but it's just like it is like a part of their exercise. They enjoy it. It is an escape for them, right? And yeah, I kind of find it as a common trait when I was preparing. तो जिन लोगों से भी बात करता था, जिन लोगों के भी works देखता था, all the people from NID and IITs, I kind of observe one thing कि यार ये सभी life sketching करते हैं.
all their sketchbook is filled with life sketches and all the things, small things that they observe in their daily. So I think it plays a very crucial role in your preparation for both exams. Now, how to solve the problem? Now, this is crucial. Let's say for a particular topic, let me give an example. कि during my preparation, yeah, I used to struggle a lot with poster design. मेरे कभी होती ही नहीं थी poster design. So what I used to do is कि मैंने एक simple सा solution उसका ढूंढा is कि when you struggle with a particular topic, so do a simple thing. Try to do it that particular exercise for 30 days. Or try to do that particular topic for 30 to 15 days. When I used to wake up, I used to do the poster design and simple more talking more about it. Let me give an example how I used to tackle. Let's say मैं poster design में अच्छा नहीं था, right? So I understand कि मैं poster design में actually क्यों अच्छा नहीं हूँ. I used to try to do the reverse engineering कि actually problem क्या है उस particular चीज में. तो मेरे ideations अच्छे नहीं होते थे, right? So I know कि ideations में problem है. जो आइडिया मेरे दिमाग में है वो इलिस्ट्रेशंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता था, राइट? और इलिस्ट्रेशंस में होता भी था तो इट इज लाइक वेरी बेसिक. सो द ब्रिज विच इज देयर फ्रॉम आइडिया टू इलिस्ट्रेशन वाज वेरी वीक. तो मैंने रिवर्स इंजीनियर करके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया. नाउ हाउ आई डील विद इट इज कि now I need to convert from idea to illustration. Now it is up to you कि how you find the solution. So what I found as a solution is डेली व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, तो मेरी आदत है आई नीड अ कप ऑफ टी, ठीक है. आई नीड अ कप ऑफ टी बेसिकली. तो मुझे चाय चाहिए और जब भी मैं चाय कंज्यूम करता था मॉर्निंग में, आई यूज्ड टू ओपन दिस वेबसाइट कॉल्ड कार्टून स्टॉक और उस पर बहुत सारे कार्टूनिस्ट के ड्राइंग्स होते थे. And you know, editorial cartoons are very amazing. How they define a simple or very controversial statement into a cartoon, which is very basic. दो तीन characters हो गए, even sometimes characters भी नहीं होते, and they kind of describe it. So how they communicate a lot of information through simple illustrations, right, guys? So that is one of the things that is there. And so I used to do is कि मैं एक पर्टिकुलर कार्टून पिकअप कर लेता था और उसके पीछे जो भी आइडियोलॉजी लगाई होगी, लेट्स से देयर इज अ कार्टून लाइक चिंटू है एंड मिंटू है, लेट्स से दिस इज नॉट अ कार्टून ऑब्वियसली, but editorial cartoon है, and then I try to decode it. Then again I try to reverse engineer it कि basically उस person ने क्या ideology लगाई होगी उस illustration को depict करने के, right? So basically किसी भी problem अगर तुम अपने preparation में face कर रहे हो, let's say face कर रहे हो, so a very basic solution to is to do reverse engineering. Try to understand कि actually वो topic में तुम्हें problem कहाँ आ रही है, उसको further break down कर लो. So reverse engineering, sorry, and try to break it further. ठीक है, तो पहले आपने reverse engineering कर ली उसकी and then try to break it further. So you actually understand कि at the core problem कहाँ आ रही है. At the core problem ये थी कि मेरे ideas illustrations में convert नहीं हो रहे थे. Then I try to find a solution to it, that is going through all the editorial cartoons and try to understand the ideology behind it. And I am telling you guys, right now मेरा सबसे strongest topic ही वही है कि I can turn any ideas into illustration. So even right now हमारी जब classes होती है NID में module होता है, तो whenever a faculty used to say something, तो मैं उस चीजों को एक illustration form में अपनी sketchbook में convert कर लेता हूँ, and which is very effective and efficient for me. So that is a skill that I gained in my preparation. So just don't think it related to only for NID exams, but it's like as a whole. So you guys understand that कोई भी problem आ रही है, कोई भी topic आ रही है, it is just not for the topic for exams, but any topic, any problem in general for exams or anything, you can try to solve it through this method, reverse engineering, and try to break it further to understand the core problem that you guys are facing and then find a solution. Understood, guys? Any doubt regarding this? Yeah, Abha? So, you know that thing where some ideas are very common in a lot of crowd. So, what if someone, can you hear me? Yeah, I can hear you. Go So, ahead. what if someone has like a basic idea कि उसे लगे कि ये common हो सकता है, but he is able to, you know, present it very amazingly. So, can he get selected with common idea but presented beautifully?
सी देखो बहुत, दिस इज अ क्वेश्चन, सी I can't give you the answer proper कि अच्छा ये कर लोगे तो ये हो जाएगा. As I said, NID के हर क्वेश्चन में अलग डिमांड होती है. So I can't really answer कि यार तुम कॉमन आइडियाज के साथ खुद प्रेजेंटेशन के साथ आगे निकल सकते हो. The questions have, let's say, sequence वाले questions है, right? तो वहां पर sequence वाले में the answers will be obvious. Exactly. पिकल बनाना है तो everyone knows कि पिकल को हम सरोटे जो भी बोलते हैं तुम Yeah. उससे Yeah. काटेंगे. Then we will add salt in it, we'll add oil in it, we'll add certain things to it, and we'll keep it in the jar. Now here the exact games comes in during the presentation. तुम उसको present कैसे करोगे, right? That's the Yes. thing. तो यहाँ पर presentation का game था. Now in a different question there will be a game of creativity, not of the presentation. Let's say composition. तो composition में how creative the composition can be. वहाँ पे presentation तो एक box में ही करोगे ना. The different element you can play with. So हर question का एक अलग requirement होता है. तो ये हर question को as a general treat करने की आदत छोड़ दो. Every question has its requirement. ठीक है. I guess Yeah. I Yeah, gave yeah. you a path to the question, not the answer. Thank Yeah. you. Right. ठीक है. So हाँ हमने understand कर लिया कि how to solve any problem. Now some common misconception, ठीक है, and then we'll discuss some works and then we'll end the session. Okay. Some common misconception. Is it a drawing exam? चलो तुम लोगों से पूछते हैं. Because I really like when I kind of brainstorm with you guys. Is it a drawing exam? And if not, why? And if it is, then why? Okay. Sanchika, go ahead. Okay, so this is not a drawing exam. This is not about aesthetics or fine arts. I have prepared for both, like for some days, for design as well and for fine arts as well. So what I have understood is, um, drawing is just a medium for design exams. It's like it acts as a uh, bridge for showing what are the ideas that we have in our mind. Right. Okay. Uh, yeah. Anyone else? Yeah, Nanya. ठीक है, डिज़ाइन के वो ड्राइंग एलिमेंट मीडियम तो बन जाता है, लेकिन बट कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ड्राइंग अच्छा करना मजबूरी ही हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है. ठीक है. Anyone else? Yeah, Ankur. So in drawing exam, basically they fine arts. You have to duplicate the thing like portraits. How it is, how you can beautifully present it. How exact duplicate copy you can make it. But in this type of design, you have to come up with creative ideas and solutions. This is the difference I feel. So just not drawing. It's like thinking differently and being unique. Yeah. I guess. Yeah. So see, guys. Yeah, it's true. That's not a design exam. Okay. It is drawing is just a way of communicating your ideas. And हमारे orientation के पहले दिन में NID में मैंने यही question पूछा था. मतलब मुझे आंसर मालूम था, but there was a guest faculty who was in this industry for a very long time, very long time. Okay, she is very old. So I asked the same question, why we approach design through art, and what she answered is, we're not learning art, but how will you communicate your ideas if there's no medium for it? Let's say if you're learning something, there are text, there are things that you will, you will type it out. So then वो चीज तुम्हें राइटर नहीं बनाएंगे. You are just presenting your ideas through text. Here we are presenting our ideas through visuals. This might मतलब बहुत difference नहीं है यहाँ पे. But we are just using visuals to represent our ideas instead of text. Right? We sometimes use text for sure. So that is the thing. So, but exactly the second point, that is competition, right? If you don't have very good drawing, we can't. It's very difficult to beat the competition and all that. So at the same time, our idea needs to be very good and with a good skills, right? And अगर तुम आइडिया मिस कर जाओगे, बहुत बेसिक चाइल्डिश आइडिया कराओगे जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो देन यू विल लूज द मार्क्स. ठीक है. तुम्हारे बहुत अच्छे आइडियाज है, बट यू विल मेक वेरी बेसिक 2D ड्राइंग्स टू एक्सप्लेन इट,
and at the same time a person with good idea, with good drawing skills, with presented, will win the game. It's as simple as that. So you can't play with कि यार मैं किसी एक चीज पर bet ले लूंगा. I'm just sharing my view, and I'm not just बोल रहा हूँ कि अच्छा ये करो, idea भी करो, skills भी करो. I'm giving you explanations for that also. So I'm not putting an idea into your mind. I'm just giving an explanations for it. Now again, idea versus skills, we just discuss it right here. Idea versus skills. How important idea is, how important skills is. Is it presentation really matters? Now all these things are बहुत end की बात है, but apart from actually idea, skills, your preparations, all these small things really matters a lot. So जो एक इंसान है ना, I know who have very good drawing skills and ideas, but have used 8B pencil. और आई एम प्रिटी श्योर बाय द एंड जब एग्जामिनर के पास पहुंचा होगा वो एडबी पूरी स्मज हो गई होगी, ठीक है, और उसका पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया होगा और उसके बहुत कम मार्क्स. तो या प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, राइट? अपार्ट मतलब इट इज नॉट द primary focus you guys need to have, but it's just like one of those things, right? Idea versus skills and presentations. Practical versus imagination. We just answered it in the beginning of the session that both things are there, but with questions they differs, right? So I guess I just cleared some of the misconception. Anyways, see, ये सारे मिसकंसेप्शन हम पूरी हमने जो हमारा सेशन हुआ उसके अगर इवन इफ आई ये सब मैं नहीं आंसर करता तो तुम लोगों के माइंड में ऑलरेडी आंसर्स होते, क्योंकि हमने पूरे सेशन में वो कवर कर लिया है. This is the whole objective of the session, is to understand the brief of the exam and how to do the preparation. So yeah, I guess this was from all the preparation and all that. Now we'll do a small question discussion from all these 3 questions. I'll do one of the questions. So let's say I'm taking this question, and then we'll discuss कि मैंने अपना solution कैसे provide करा था इस particular question के लिए. And this is not the ultimate answer to it, but this is one of the solutions, right? So now the question was is to have to depict in I don't know if there were steps mentioned for it, but you have to show how to prepare tea. Now what I'm seeing here is there's a very blank space that was given to us. Now the thing is I'm not showing very realistic drawing of a particular thing, right? कि यार यही एक solution है या फिर I'm not using skills to a very great extent, right? यहाँ पर बहुत कम time मिला था. This one I did in within just I guess 10 minutes, I guess 10 minutes. तो मेरे पास realistic work करने का बहुत ज़्यादा time नहीं था. I need to use my skills at a very there was like what I say at a very small extent, but I have to be creative at the same time. So someone asked na presentation and idea and all that. The idea is very simple. हम यहाँ पे tea बनाएंगे तो basically all these things will be followed for a tea, right? Even कुछ steps miss हो गई है क्योंकि I can't cover all the steps in 5 frames. But हाँ ठीक है, the idea will be the same. tea सब एक ही method से बनेंगे. But how I presented it here is what it matters. I had just 10 minutes, so I can't make very realistic stuff, and मुझे बनाना भी नहीं है. So how creatively I showed it here. I'm not saying this is the perfect solution. Solution can be far better than this, but this is one of the solutions that can be a lot of flaws in this. That's not the whole point of it. We are just pointing out the good thing that is there in this particular drawing. Instead of just showing it in 5 frames like this, like this, like this, like this, I showed it in a very creative composition where a cup is holding in 5 different hands at 5 different frames, which is moving in a clockwise direction. So मेरी eyes भी एक उसको follow कर रही है, right? Now how creatively I've used the typography behind it, some cookies to make it fun and like this. अब ये वाला मैंने इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं करा है कि अगर कोई पर्सन इसको देखकर चाय बनाना सीखना चाहेगा तो वो समझेगा ही नहीं यार चाय कैसे बनानी है. This is also instructional drawing. At the same time, this is in sequence drawing. So it's working like both of the drawing. कि अगर कोई देखकर इसको बनाना चाहता है, and it was written कि हमको instructional drawing बनानी है, I guess. तो यहाँ पे इसको देखकर कोई बना भी सकता है चाय, and how creative it is at the same time. ठीक है. So I had a very less time, so I need to use my skills at a very optimal level, but at the same time I was unique. So हम इस सब चीजों का एक how to approach वाला सेशन थोड़ा बाद में आएगा तुम लोगों का, where
आई विल टीच यू गाइस कि किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते इन द राइट वे कि हम कोई सॉल्यूशन गलत ना प्रोवाइड करते, एंड उसके लिए यूनिक कैसे हो पाए हम, एंड हम उस आंसर को एट इट्स बेस्ट लेवल हम कैसे प्रेजेंट करते। So that will be covered in how to approach, which is a very lengthy and important topic that is I'm not covering today. So yeah, all these things, I guess I pretty much covered everything. Not everything, but yeah. So yeah, these are like some of my works for UCEED, I guess. UCEED ke liye the. These are compositional drawing. All these works are done under 30 minutes. Chalo bhai, show off karte hain. I'm just kidding. So all these works are done under 30 minutes from imagination. So yeah, I'm not saying this it's the benchmark or the ultimate solutions or the ultimate work, but like it's like my approach, and I think it's pretty good. So yeah, it's like compositional drawing, and I used to have questions that I used to generate from ChatGPT, or I used to ask it from my friends, or फिर मैं sketching करता था, and yeah, these are some human figure from imagination and different questions. Yeah, और ये मेरा इंट्रोडक्शन था बेसिकली, मैंने जब अपनी फर्स्ट क्लास ली थी। एंड हाँ, ये मैंने बताया नहीं था आई गेस तुम लोगों को। दिस इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट आई डिड years ago. I don't remember. 4-5 years पहले करा था, and this is my self portrait. अब ऐसा नहीं दिखता होगा obviously. I was like in 8th-9th class में था जब मैं 9th या 10th में. So yeah. Apart from that, this is like fine arts. This don't have to do anything, but I'm just sharing stuff. All this work are imagination, and apart from that, ये particular question था, if you guys know, ये नंदू वाला क्वेश्चन था यूसीड का, ठीक है, जो 2023 में आया था। दिस इज माय सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड this is my improvement for the same question over the months June, October and November. So same question है वही नंदू वाला यूसीड 2023 का। This is in the month of June, October and November. So you guys can see the improvement, right? These are my works for NID. This is storyboarding. I love storyboarding a lot. All these works is done in under 20 minutes. Okay. 20 minutes, yeah, 22, as a push something. Storyboarding. And I guess this work is done under 15 minutes. So as a timing man. This is a poster, storyboarding again, some fun here and there, different materials and all that. So mainly वही है, NID and UCEED, you guys need to be very quick, and at the same time your skills needs to be there, right? So yeah, this is all from my side. I think you guys enjoyed the session, and now I'm taking a leave. If you guys give me the permission, give me a thumbs up. So yeah. My name is Devansh. I'm the founder of Divergent Classes. Hopefully आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, and do let us know कि सेशन कैसा था by commenting down below and liking this video. उसके अलावा let's understand how you can attend sessions like these for free. First of all, you have to visit divergentclasses.com, and यहाँ पे you can explore and understand कि हम करते क्या हैं, what we stand for. To book a trial class, you can message me on WhatsApp or call me personally, and I'll guide you through the process. उसके अलावा there is another way to book a trial class. Just clicking on book trial class button and it will direct you to a form. इस form को just आप fill कर सकते हैं to book a trial class. Just typing in a full name, WhatsApp number, email ID, which exam are you preparing for, what difficulties are you facing, and when should we call you. And you can book a free call. Now you can explore the site and understand what we are doing. And for further information and better contact, you can always message me on WhatsApp and even call me personally.